Okay, we are going to start now. Let me just share the screen. So are you guys able to see the screen? Yeah. Okay. Um, so last time we said that if you have a random variable, which is the sum of two other random variables, one random variable, which is the sum of two other random variables. So for example, if you have a random variable z, which is the sum of two random variables x and y, then um, we can find the PDF of z. We can find the PDF of z by using the PDF of x and y. X and y are random variables. They can be discrete, they can be continuous. Similarly, z can be discrete, z can be continuous. We can find the PDF of z in terms of PDF of x and y. We had an example for the discrete case. We also had an example for the continuous case. Okay. In fact, for the discrete case, it was quite simple. Not just an example. We just showed that how to find the probability that that x plus y is equal to a. So basically, the PMF of z can be found in the discrete case, and the PDF of z can be found in the continuous case. Now, the case becomes interesting. It becomes interesting when you have x and y independent. If x and y are independent, then for the continuous case, the PDF of z is the convolution of the PDFs of x and y, the PDFs of x and y. And the example that we considered was that of a uniform random variable, that x is a uniform random variable with probability density function given as this. So this is fx of x, and y is also a uniform random variable, fy of y. This is also one. Both of them are uniform 0, 1. Both of them are uniform 0, 1. Okay. And in this case, we said that f of z evaluated at a is the convolution integral of f of x a minus y fy of y dy. So this is the expression. And last time we solved this expression by using the PDF of x and y. And it turned out that the PDF of z looked something like this. The PDF of z looks something like this: -1, 2, +1.
and this was the PDF of Z. In fact, this A, which is written here, is this guy here. This can very well be, this guy is the argument of the PDF, and I can actually replace it with Z. It doesn't matter. It's just a variable whichever you use. Z use कर लें, A use कर लें, जो भी use करना चाहते हैं. Now, and the height of this is also 1. And we verified last time that the area under this curve, area is obviously, since this is a PDF, so this area has to be equal to 1. And the way that we found this PDF was by considering the PDF of two uniform random variables. By considering the PDF of two uniform random variables. So we said that fy of y is 1 only when y is between 0 and 1. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं this fy of y here, this guy here, will always be 0 except when y is between 0 and 1. तो हमने क्या किया था इसको? हमने इसको ऐसे लिख दिया था. This was equal to integral y going from 0 to 1 and then fx of z minus y. When y is between 0 and 1, then fy of y at that time is just 1 dy. ठीक है? और कुछ भी नहीं किया था. And then we said that fx of x, this guy here, fx of x, this guy here, is also 1 only when the argument of the function is between 0 and 1. इसका मतलब है कि z minus y जब भी ये 0 और 1 के बीच में होगा, जब भी ये 0 और 1 के बीच में होगा, only then fx of x would be 1, otherwise it would be 0. ठीक है? और फिर उसके लिए हमने 4 रेंजेस डिफाइन की थी. I'm not going to go over that again. Last time we promised कि हम आपको इसका जो एक ग्राफिकल तरीका भी बता देंगे. ठीक है? In order to appreciate the graphical method, consider this expression. ये वाली expression जो है इसको consider करें. So this expression is fz of z is equal to integral minus infinity to plus infinity fx of z minus y fy of y dy. So basically, if you focus on this expression, ये equation क्या कह रही है? ये equation कह रही है कि you have to find the area under the curve from minus infinity to plus infinity, the area under the curve, which is the integral from minus infinity to plus infinity of the product of two functions, ये fy of y and fx of z minus y. So ये दोनों हमें पता है, fy of y भी पता है और fx of z minus y भी हमें पता है. ठीक है? Now fy of y हमें कहाँ पे पता है? वो तो हमने यहाँ दिया हुआ. This is fy of y. ठीक है? So basically this fy of y is this guy here. Okay? What is fx of z minus y? Fx of z minus y. Now this depends upon what value of z is there. सबसे पहले तो हम लिखते हैं fx of x. वो हमें पता है कि fx of x is given to us as this probability density function. ठीक है? अगर मुझे fx of z minus y लिखना हो तो स्टेप वाइज करते हैं. तो मैं इसको कहता हूं कि ये fx of minus x कैसा होगा? fx of x हमें पता है कि कैसे, fx of x हमें पता है कि ऐसा है. fx of minus x कैसा होगा? Just the mirror image. If you have x here and then you just take the mirror image here. ये fx of minus x होगा, -1 0 और 1 here. ठीक है? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमने क्या किया, fx of x जो हमें दिया हुआ था, fx of x हमें जो दिया हुआ था उसको हमने रिफ्लेक्ट किया वर्टिकल एक्सिस में. सो fx of minus x आ गया हमारे. सो दिस इज fx of minus x. oops, fx of minus x. Okay, now if I want to write fx of minus y, all I need to do is इस x को उठा के इसकी जगह पे y लिखेंगे, इसकी जगह पे y लिखेंगे. fx of minus y. This is fx of minus y.
This is fx of minus y. Now, if I want to write fx of 1 minus y, fx of 1 minus y, fx of 1 minus y अगर मुझे लिखना हो तो वो मैं कैसे लिखूंगा, वो हमें पता नहीं है अभी, अभी देख लेते हैं. So let me just write fx of 1 minus y या 2 minus y या 3 minus y या 4 minus y, जो भी लिखना चाहें. So let me just 1 से जरा कंफ्यूजन हो जाएगी. So maybe 3 minus y इसको करते हैं, fx of 3 minus y. So you have 0 here and you know you have y here. You already know that fx of minus y looks like this, and what would fx of 3 minus y will look like. देखें यहाँ पे whenever y is minus 1, whenever y is minus 1, I am sitting here. Whenever y is 0, I am sitting here. Okay. So यहाँ पे when y is 0, then 3 minus y at that time y should be equal to 3. So इसका मतलब है कि हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे. So this is 3. So this is shifted to the right and something like this. 2, 1. So this is how fx of 3 minus y will look like. What would be the shape of fx of z minus y? Fx of z minus y. Fx of z minus y will look like this. यहाँ 0 है, ये z है, और ये z plus 1 है, and this is 1. Height is 1. This is fx of z minus y. So all we needed to do is कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, fx of x से स्टार्ट किया. ये मैं इसको फिर सर्कल करने लगा. fx of x से हमने स्टार्ट किया, ठीक है. उसको हमने फ्लिप किया तो आपके पास fx of minus x या fx of minus y मिल गया, और फिर उसके बाद उसको शिफ्ट किया, फ्लिप करके उसको शिफ्ट किया तो ये fx of z minus y मिल गया. ठीक है. Now notice that yes सर बस कंफर्म करना था सर, ये z minus 1 और z नहीं होगा on the y axis? z minus 1 on the y because axis z minus y हो रहा है ना, तो सर वो राइट वाला z नहीं होगा and the left one z minus 1. एक्सेस पे मैं इस वाले के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो मैं सब. जी सर, जिस तरह क्योंकि पिछला वाला 3 minus y था, उसमें 3 था और फिर लेफ्ट पे 3 minus 1 था, तो इस तरह इसी पे भी जो है z minus y पे z और z minus 1 नहीं होगा नीचे एक्सिस पे जो आपके पॉइंट्स होंगे. ये yes, you are right. So ये 3 minus y था, तो इसको हमने 3 यूनिट्स राइट पे शिफ्ट किया था. इस ग्राफ को 3 यूनिट्स राइट पे शिफ्ट किया था. ठीक है. तो ये z minus y है, इसको z यूनिट्स राइट पे शिफ्ट करेंगे तो you are absolutely right. So this would be z and z minus 1. That is, thank you very much. Thank you sir. Yeah, thanks. So basically क्या किया कि हमने स्टार्ट किया यहाँ से fx of x से हमने स्टार्ट किया, उसको फ्लिप किया तो fx of minus x या fx of minus y आ गया. फिर उसको हमने शिफ्ट किया, 3 यूनिट शिफ्ट करें तो 3 यूनिट राइट चला जाएगा, z यूनिट शिफ्ट करेंगे तो z यूनिट्स राइट पे चला जाएगा. ठीक है. So now we know that the shape of fx z minus y is flipped version of the uniform and shifted version of uniform. अगर ये यूनिफॉर्म की जगह पे एक्सपोनेंशियल होता, अगर हमारा fx of x इस तरह का होता, this would have been our fx of x. Then fx of z minus y would look like the following. यहाँ पे होता और ये फ्लिप. सो पहले इसको फ्लिप करते, इस वाले को फ्लिप करते और उसके बाद उसको z यूनिट्स शिफ्ट करते. ठीक है. एवरीवन इज ओके विद दैट? कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? दिस इज fx of z minus y. So z minus y का मतलब, and the axis obviously is y. So आपने फ्लिप करना है
x वाले को और उसके बाद उसको z यूनिट्स शिफ्ट कर दें, ठीक है। नाउ वन थिंग दैट यू शुड नोटिस इज के दिस z गाय कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। z जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर z नेगेटिव होगा तो fx ऑफ z माइनस वाई, fx ऑफ z माइनस वाई, ये ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे 0 है और ये यहाँ पे z है एंड दिस इज z minus 1. If z is negative, then if z is negative, then this is how it will look like. Now, coming back to this expression that we had, कि हमने यहाँ पे क्या करना था, probability density function of z find करना था. Probability density function of z is found by multiplying fy of y, which is this guy simply, एंड एफ एक्स ऑफ z माइनस वाई, जो अब हमें पता चल गया कि फ्लिप करना है और शिफ्ट करना है z यूनिट्स, और उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और एरिया अंडर द कर्व निकाल देना, ठीक है, फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ z. रिमेंबर दिस इज एफ z ऑफ z, विच मीन्स के हमने ये जो एफ z ऑफ z मालूम करना है, ये स्मॉल z जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक वेरी करेगा, ठीक है. सो नाउ इन दिस केस, नाउ इफ आई कैन ड्रॉ हियर, this was our fy of y, 1 0 1. This was our fy of y, and now this guy here 0, and this guy is our fz of z, fx of z minus y. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जिस तरह मैंने कहा था कि z आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. दिस गाय हियर, इसको मैं हाईलाइट करता हूं, दिस गाय हियर जो अभी ये सर्कल में आ रहा है, दिस इज fx ऑफ z माइनस y, fx ऑफ z माइनस y फॉर वैल्यू ऑफ z विच इज वेरी पॉजिटिव. दिस गाय हियर, अब मैं जिसको सर्कल करने कर रहा हूं, ये भी fx ऑफ z माइनस y है फॉर वैल्यूज ऑफ z which are negative. This guy here is also the same function fx of z minus y. ये तीनों जो हैं, ये तीनों एक ही चीज है, सिर्फ इसमें मैंने z की वैल्यू जो है अपनी मर्जी से कुछ चूज कर ली है. यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू चूज की है, यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू चूज की है. यहाँ पे मैंने z की वैल्यू जो चूज की है वो ऐसी चूज की है कि वो 0 से थोड़ी सी बड़ी है, सो दैट z minus 1 नेगेटिव हो जाता है और z जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता है. एवरीवन इज ओके विद दैट? Everyone is okay? Yeah, great. So knowing that this is fy of y and this is fx of z minus y, अब हमने क्या करना है, इन दो फंक्शन को प्रोडक्ट करना है और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर देना. सो व्हेन आई टेक द प्रोडक्ट ऑफ दीस टू गाइस, अगर इन दोनों की हम प्रोडक्ट लें तो कैसे लेंगे, मैं एक ही पिक्चर पे इनको बनाने की कोशिश करता हूँ. सो ये fy of y, दिस इज योर fy of y, और दूसरे कलर से हम fx of z minus y बनाते हैं. So this is 0, this is 1, this is y, and this is z, this is z minus 1. This guy is fx of z minus y, ठीक है. अब इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट करना है. वाई? इनको मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट इसलिए करना है क्योंकि ये एक्सप्रेशन ही हमें ये कह रही है, कन्वोल्यूशन की एक्सप्रेशन हमें ये कहती है कि fz of z here is equal to the product of fx of z minus y and fy of y integrated from minus infinity to plus infinity. So इसको हमें प्रोडक्ट लेना है और इन दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे, इसकी हाइट भी 1 है, इसकी हाइट भी 1 है, इन दोनों की जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो आपके पास आंसर 1 ही आएगा और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर देंगे तो आपके पास ये देखें एरिया कितना आएगा. दिस एरिया इज आंसर इन द चैट विंडो. दिस एरिया is z. So whenever z is between 0 and 1, our fz of z is equal to z. Whenever this guy z is between 0 and 1, तो ये देखें, इसको अगर मैं रेड वाले को स्लाइड करके थोड़ा सा और राइट पे भी ले जाऊं
तो मैं इसको करके दिखाता हूँ। इस रेड वाले को स्लाइड करके और थोड़ा सा राइट पे ले जाते हैं, ये देखें, और राइट पे ले गए, बट वी मेड श्योर दैट दिस गाय Z is to the left of this one, so that Z is between 0 and 1. ये this Z is between 0 and 1, तो हमारे पास area under the curve जो होगा वो ये होगा, which will be equal to Z. This is exactly the same expression that we got yesterday in the previous lecture, कि whenever Z is between 0 and 1, fz of Z is equal to Z. ठीक है, अगर Z आपके पास 0 से छोटा हो जाए, अगर Z आपके पास y से छोटा हो जाए, अगर आपके पास z y से छोटा हो जाए, so that means this guy fx of z minus y will be less than, ये रेड वाला जो आपके पास फंक्शन है, ये इस एज से पीछे निकल जाएगा, सो ये इस एज से पीछे निकल जाएगा। So in this case the area under the curve of the product of the two curves, ये रेड और ब्लैक को मल्टीप्लाई करना है, और एरिया अंडर द कर्व आपने जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आपने इंटीग्रेट कर देना है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। नाउ व्हाट वुड बी द आंसर इन दिस करंट सिचुएशन? व्हाट वुड बी द आंसर? रेड और ब्लैक को मैंने मल्टीप्लाई करना है और माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट करना है, सो आंसर शुड बी जीरो, आंसर शुड बी जीरो। ठीक है, सो इसका मतलब है कि whenever z is less than 0, fz of z would be equal to 0। ये भी एग्जैक्टली वही है जो हमने लास्ट टाइम देखा था, एंड इनफैक्ट आई एम लुकिंग एट द नोट्स, देयर इज अ स्मॉल टाइपो देयर, वो हम फिक्स कर देंगे, बट z लेस देन 0 होगा तो ये आंसर हमारे पास fz of z will be equal to 0। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या होगा? देखिए ये रेड वाला जो है, ये स्लाइड जैसे जैसे z चेंज होता जाता है, z माइनस 1 है, जैसे मैं z की वैल्यू को चेंज करता जाता हूँ, ये 0 से आगे निकलेगा तो एक चेंज आ जाएगी, फिर जब चेंज आएगी तो इसका मतलब है कि ये रेड बॉक्स यहाँ आ जाएगा, तो ये एरिया आ जाएगा विच वुड बी z हियर। थोड़ा और आगे लेके जाते हैं इसको, तो अब हम ऐसे करते हैं कि इसको यहाँ ले जाते हैं, सो दिस इज z माइनस 1। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर देता हूँ, z एंड z माइनस 1। ठीक है, नाउ in this case what is the area under the curve? Now z is greater than 1, but z is less than 2, z is greater than 1 less than 2। क्यों मैं लेस देन 2 कर रहा हूँ? क्योंकि z अगर 2 से भी बड़ा हो जाएगा तो रेड एंड ब्लैक का ओवरलैप फिर खत्म हो जाएगा, सो z is greater than 1 but it is less than 2, z is greater than 1 but less than 2। what is this area under? This area under the curve would be, ये जो दोनों रेड और ब्लैक की प्रोडक्ट के नीचे एरिया अंडर द कर्व है, what is this area under the curve? ये रेड एरिया क्या? आंसर इन द चैट विंडो, this red shaded area, answer in the chat window. This is 2 minus z। देखें, this red area is, ये पूरा ब्लैक के नीचे जो एरिया है वो 1 है, और उसमें से आपने कुछ z माइनस 1 को माइनस कर दिया, सो दिस वुड बी fz of z would be equal to 1 minus z minus 1 which is equal to 2 minus z। ठीक है, and when z is greater than 2, then fz of z, when z is greater than 2, which means कि z अब यहाँ पे आपके पास कहीं है और z माइनस 1 कहीं यहाँ पे होगा, दिस इज z एंड दिस इज z माइनस 1। सो ये रेड बॉक्स हमारा स्लाइड करके इस ब्लैक के ऊपर से गया, जब ब्लैक के साथ वो ओवरलैप हुआ था तो एरिया आपका इंक्रीज होता चला गया और उसके बाद जो है वो डिक्रीज होता चला गया। सो
so that means कि z less than 0, अब ये हम f z of z को प्लॉट कर रहे हैं कि लेस देन 0 पे आंसर हमारे पास 0 था, 0 से 1 तक के बीच में, 0 से 1 तक के बीच में आंसर वाज z, which means this guy, and 1 से 2 के बीच में the answer was 2 minus z, which means कि this guy, और 2 से बड़ा होने की सूरत में this was 0 again. So this is exactly the same. ये बल्कि ऊपर जो हमने बनाया यहाँ पे, this should be 0, 1 and 2. यही मिस्टेक लास्ट टाइम नोट्स के अंदर हुई थी, तो उसको हम फिक्स कर देंगे. And the height of this guy is going to be 1. So this is how you find the probability density function by using the convolution. देखिए, one thing that I want to point out here है कि दो यूनिफॉर्म्स को आपने कन्वॉल्व किया है, यानी x और y दोनों यूनिफॉर्म थे, उन दोनों को आपने ऐड किया है, both of them were independent, ठीक है. तो आपके पास ये ट्रायंगुलर डेंसिटी फंक्शन है. दिस इज अ ट्रायंगुलर डेंसिटी फंक्शन. अगर आपके पास x1 यूनिफॉर्म हो प्लस x2 यूनिफॉर्म हो इंडिपेंडेंट, तो ऐसा डेंसिटी फंक्शन आएगा. दिस वुड बी द डेंसिटी फंक्शन. अगर मैं एक और x3 उसमें ऐड कर दूं तो कैसा होगा, फिर x4 एक और ऐड कर दूं कैसा होगा, फिर x5 ऐड कर दूं कैसा होगा, फिर x6 ऐड कर दूं कैसा, और ये अगर बहुत ज्यादा सारे ऐड कर दूं तो दिस डेंसिटी फंक्शन, द सम डेंसिटी फंक्शन, ये पहले आपके पास x1 का ऐसे था, फिर x1 प्लस x2 का डेंसिटी फंक्शन ऐसे आ गया, दोनों को जब आपने कन्वॉल्व किया. सो दिस इज अ स्मूथिंग इफेक्ट. x1 प्लस x2 प्लस x3 का डेंसिटी फंक्शन किस तरह का होगा, ये थोड़ा से एजेस जो है इसके ऐसे हो जाएंगे, और ठीक है, और फिर x4 का और स्मूथ हो जाएंगे. एंड यू विल सी कि when we have sufficient number of these uniform random variables independent IIDs added together, या आपको जो है ना ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की तरह लगने का, which is our central limit, क्यों ना, ये हमें तस्वीर से भी पता चलता है. ये 3-4 को आप प्लॉट करके देख लें, ग्राफिकल कॉन्वोल्यूशन ये आप करके देख लें. इनफैक्ट यू कैन डू इट ऑनलाइन टूल्स के ऊपर आप जाके करके देखें, एंड यू विल सी दैट आफ्टर एडिंग 3 or 4 or 5 independent uniform random variables, you will start seeing something which is very similar to the Gaussian distribution. Okay. So this is a note to make a central limit theorem. Now, sometimes back we had talked about the sums of gamma random variables, sums of independent gamma random variables, sums of independent gamma random variables. And there is a proof given in the notes, proof in notes. इसको consult कीजिए. I'm just going to tell you the result here. कि if x is gamma with parameter s lambda and y is also gamma with parameter t lambda. Remember gamma random variable क्या था? Gamma random variable एक extension of exponential random variable था, ठीक है? So lambda is the same that you see in exponential. It's the decay factor, and s is, if it is an integer, that is the number of events that you want to accumulate. Gamma is the time until that many events. Okay? So gamma s lambda and gamma t lambda, if these two are independent, then we can show that, which is given in the notes, proof in the notes, that x plus y is also a gamma with parameter s plus t lambda. And this is not surprising. देखें, यूं से देखें कि पहले हम s इवेंट्स का इंतजार कर रहे हैं विद पैरामीटर लैम्डा, और फिर t इवेंट्स का इंतजार कर रहे हैं विद पैरामीटर लैम्डा. अगर दोनों को हम सम कर दें तो रियली वी आर वेटिंग फॉर s plus t events both with the parameter lambda. If their lambdas are not the same, then this expression is not going to be valid. The lambdas have to be the same. So little proof is given in the notes. Okay. तो अभी तक हमने क्या किया? ये कि
you know, we started off, हमने कहा कि एक रैंडम वेरिएबल है एंड यू कैन फाइंड द डेंसिटी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल. रीकैप थोड़ा सा करिए. सो सबसे पहले हमने ये किया था कि गिवन वन रैंडम वेरिएबल you can find the PDF of a function of that random variable. ठीक है कि अगर आपको y is equal to fx दिया है एंड fx is some function, x जो है वो एक रैंडम वेरिएबल है, तो y का PDF आप फाइंड कर सकते हैं. इसके मेथड हमने 3-4 लेक्चर्स पहले पढ़े. फिर उसके बाद अब हमने क्या किया कि z is equal to x plus y, ठीक है, sums of random variables. ठीक है, ये भी हमने कर दिया. तीसरी चीज जो अब हम करने वाली हैं, this is joint functions. This is joint functions. Joint functions, also called the bivariate change of variables. इसका क्या मतलब है? This is nothing too different. यहाँ पे ऐसा है कि you are given x1, x2, two random variables are given to you. Maybe they are independent, maybe they are not independent, and their joint PDF is fx1, x2, small x1, small x2. Joint PDF. This is the joint PDF. If they are independent, then fx1, x2 can be written as the product of marginal PDFs. ये हमने देखा पहले. ठीक है? So now you are given this. Find the joint PDF. Find the joint PDF of y1 and y2, where y1 is some function g1 of x1 and x2, and y2 is also some other function of x1 and x2. अब यहाँ पे क्या है, दो रैंडम वेरिएबल हैं और उन के दो फंक्शंस आपने डिफाइन किए हैं और दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, एक y1 है और एक y2 है. अब हमसे कह रहे हैं कि जी आप y1 और y2 का जॉइंट पीडीएफ फाइंड करें. ठीक है, so Mariam, I just saw your question. How is z greater than 0? Please ask this after the class. ठीक है, अभी we have moved on. मैंने अभी आपका क्वेश्चन देखा है, क्लास के बाद फिर पूछ लीजिए. Okay. So now you are given x1, x2, and you are to find the PDF of y1 and y2. This is possible to, you can possibly find this, and we can prove this. Again, we will not show the proof here, but we can find the joint PDF of y1 and y2 as fy1 comma y2 small y1 y2 is equal to in terms of the joint PDF of x1 and x2 as fx1 x2 x1 and x2 divided by something. ठीक है, वो समथिंग अभी हम नहीं आपको बता रहे, अभी बता देते हैं. ठीक है, लेकिन सबसे पहले तो एक और प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर the variables are small y1 and small y2, लेकिन यहाँ पर तो आपके पास आंसर x1 और x2 की शक्ल में आ रहा है. ऐसे थोड़ी होता है. ऐसे हम थोड़ी लिख सकते हैं कि x is exponential lambda, तो हम ऐसे कभी लिख सकते हैं fx of x is equal to lambda e to the minus lambda y. ऐसे नहीं कभी लिख सकते. अगर यहाँ y हमने लिखा है तो यहाँ पर भी y होना चाहिए. अगर यहाँ पे मैंने a लिखा है तो यहाँ पर भी a होना चाहिए. अगर यहाँ पे मैंने x लिखा है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए. ऐसे होना चाहिए. तो but this is problem. I cannot just write y here and x here. ऐसा नहीं हो सकता. Since this is not allowed, this doesn't make sense. So यहाँ पे ऊपर वाली एक्सप्रेशन में नीचे तो जो भी होगा ऊपर यहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो गई है.
कि यहाँ पे I am interested in finding the joint PDF of y1 and y2 evaluated at this small y1 and small y2, लेकिन मेरे पास ये आंसर x1 और small x2 की शक्ल में आ रहा है. Well, that means I can express small x1 and x2 in terms of y1 and y2. How? I can do that by using these two equations. इनको सिर्फ इनवर्स करना है मुझे. y1 और y2, कैपिटल y1 y2 आपको दिए हैं in terms of capital x1 and x2. I can inverse these expressions. So basically ऐसे लिख सकते हैं कि you have this y1 y2 is equal to some g matrix of x1 and x2. So G will be a 2 by 2 matrix. वो आपको दी हुई है, आपने सिर्फ उसको इनवर्स करना है. So x1 और x2 को G इनवर्स ऑफ y1 and y2, ये भी एग्जांपल देंगे तो बड़ा क्लियर हो जाएगा. So if I can write y1 and y2 in terms of x1 and x2, then obviously I can solve these two equations. ये दो equations हैं, इनको मुझे सिर्फ solve ही करना है to find the value of x1 and x2. To find the value of x1 and x2. So I will be able to write x1 and x2 here in terms of y1 and y2. And I write that as, इसको मिटाते हैं यहाँ से. I write that as x1 will be equal to some function h1 of y1 y2. वो h1 हमें find out करना होगा जो inverse function होगा. And x2 will be equal to h2 of y1 and y2. How do you find h1 and h2? Well, depend करता है कि वो what those functions g1 and g2 are. And what is this new denominator here? This denominator j x1 x2 is defined as follows. This guy here is going to be j x1 x2. This is called the Jacobian. This is called the Jacobian of the transformation. Jacobian of the transformation. या आपने दो रैंडम वेरिएबल थे x1 x2, उससे आपने ट्रांसफॉर्म करके दो और रैंडम वेरिएबल बना दिए y1 y2, which are the joint function of x1 and x2. And what is this Jacobian? This Jacobian is partial g1 over partial x1, partial g1 over partial x2, partial g2 over partial x1, partial g2 over partial x2. इनकी आपने डेरिवेटिव्स लेने हैं, but we need to make sure that this is not equal to 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में यहाँ पे आ रहा है. अगर ये 0 आ गया तो फिर then we will not be able to make this transformation. तो फिर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकेंगे. So obviously example is in order to make sure that we clearly understand this. ये example यहाँ पे आती है हमारे पास, बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि you are given y1 is equal to x1 plus x2. ये कोई एक फंक्शन है. Similarly, you are given y2 is equal to x1 minus x2. ठीक, बहुत सिंपल सा है. And x1 and x2 are jointly distributed with joint density function f x1 x2 x1 x2. This is the joint PDF of x1 and x2. Joint PDF of x1 and x2. And we are asked to find the joint PDF of y1 and y2. Find joint PDF of y1 and y2. y1 और y2 का joint PDF हमें find करना है. ठीक है, सबसे पहले चेक करते हैं जैकोबियन 0 तो नहीं है. अगर 0 है तो हम कह देंगे बस गेम ओवर, वी कैन नॉट डू दैट. सो सॉल्व कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले j x1 x2 जैकोबियन फाइंड आउट करते हैं. सो So if you notice that this is the function of x1 and x2, so partial g1 over partial x1, what is this going to be? So this is g1 and this is g2. Okay. What is partial g1 over partial x1? So g1 को x1 से differentiate करें, x2 is constant, so you will get 1.
पार्शियल g1 ओवर पार्शियल x2 क्या होगा? दिस इज आल्सो बी वन। पार्शियल g2 ओवर पार्शियल x1, इसका मतलब है g2 को आप x1 से डिफरेंशिएट करें, you will get 1. Partial g2 over partial x2 is going to be minus 1. So this answer is going to be minus 1 minus 1, which is minus 2. This is the Jacobian. This is the Jacobian. Okay. And you notice in the denominator, we put the Jacobian as the absolute value. इसकी absolute value लिखते हैं. So this minus 2 will actually be written as 2. So now I want to write the probability density function, joint probability density function of y1 and y2 in terms of fx1, x2. So the way that I will write it as fy1, y2, y1, y2 will be equal to, now look at this expression. This is fx1, x2, x1, x2 divided by the Jacobian magnitude, which is 2. Yeah. But where x1 and x2 are found as y1 is equal to x1 plus x2 and y2 is equal to x1 minus x2, which implies that या आप मैट्रिक्स इन्वर्शन से कर लें इसको, मैट्रिक्स इन्वर्शन से जो हमने यहाँ पे बताया कि this is equal to y is equal to y1 y2 is equal to g of x1 x2. So x1 x2 would be equal to g inverse of y1 y2. या सीधा सीधा इस केस में तो ये सॉल्व कर लें, इन दोनों को ऐड करेंगे, so you will get x1 to be equal to y1 plus y2 over 2 and x2 would be equal to, subtract करें, y1 minus y2 over 2. Thus fy1 y2 y1 y2 would be equal to f x1 x2, but now evaluated at y1 plus y2 over 2 y1 minus y2 over 2 divided by 2. So this is going to be our joint PDF that we wanted to find. अब अगर आपको दिया हुआ हो x1 का और x2 का PDF, x1 और x2, अगर if x1 and x2 are independent, so obviously this can be written as f of x1 y1 plus y2 over 2 into f of x2. कैसे क्यों सेपरेट कर सकते हैं? क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो उनके हमें डेंसिटी फंक्शन सेपरेट कर सकते हैं, right? If they are independent. So इंडिपेंडेंस का जरा रिकैप करते हैं, रिकैप ऑफ इंडिपेंडेंस, recap of independence ये था कि when fxy xy can be written as the product of the marginal density functions, can be written as the product of marginal density functions including the limits भी मिक्स नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि x smaller than y, y smaller than x, ये नहीं, y की अपनी लिमिट्स हो, x की अपनी लिमिट्स हो, और प्रोडक्ट में ये नाइसली जो है हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, then x and y will be independent. Okay. Now if they are independent, okay, then the expected value of some function of x and some other function of y, some function of x, some other function of y can be written as expected value of x multiplied by expected value of gy. ये हम इसको अलग कर सकते हैं, दिस इज, इसकी स्पेशल फॉर्म क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई वुड बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स अलग हो सकती है और वाई अलग हो सकती है, only if they are independent, ठीक है.
अगर ऐसा हो जाए, if they are independent, then I can write the expected value of xy to be equal to expected value of x and expected value of y product. Similarly, any function of x, any function of y can be written as expected value of that function of x multiplied by the expected value of that other function of y. इसका एक बड़ा छोटा सा एक लाइन का प्रूफ है, ये भी नोट्स के अंदर दिया है, आप काइंडली वहां से देख लीजिए, ठीक है. Now, this is when they are independent. By the way, if this expression is true, if this is true, not necessarily independent, this does not imply independence. अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो ये ट्रू होगा, लेकिन अगर ये ट्रू होगा तो इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे, नॉट नेसेसरीली. हमारे पास एक दो एग्जांपल्स हैं जो हमने नोट्स में भी दी गई हैं, अब आपको बता भी देंगे अभी. नाउ which means this is a one way street, this is not a two way street. Independence does imply that this will happen, but if this happens, that expected value of xy is the product of expected value of x, expected value of y, then that doesn't mean कि वो independent है. Not necessarily, हो सकते हैं, लेकिन not necessarily. Now, if x and y are not, if x and y are dependent, इसका क्या मतलब है? Then knowing one tells you something about the other. And this is the basis for all the estimation, all the prediction, all the data science, all the machine learning. Your dependence between the random variables is something which is the fundamental behind all of these things. All the prediction, all the estimations, all the machine learnings are done because one random variable is dependent upon some other random variable. अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो हमें x का अगर पता चल जाए तो हम y के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है. So for example, if I tell you the weather of Lahore in the past 5 years every single day, and I ask you to predict the weather of Lahore tomorrow, you will not be able to do that unless there is a dependence between the daily weather. So very, very important. This dependence is extremely important, and in order to capture that, we have a quantitative way of capturing that. Okay? And that quantitative way is defined in terms of what we call covariance and correlation. पहले covariance पढ़ते हैं, फिर आपको correlation के बारे में. So the covariance between two random variables x and y is defined as expected value of x minus expected value of x multiplied by y minus expected value of y. So कुछ भी कोई मैजिक नहीं है यहाँ पे. This is a simple definition which is equal to, इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास आएगा expected value of xy minus expected value of x into expected value of y. This will turn out to be true. Now हमने आपको कहा था कि अगर x और y independent होंगे तो this guy will be equal to this guy if independent x and y, then covariance of x and y would be equal to chat window में बता दें, 0. Covariance will be 0. If covariance is 0, if covariance of xy is equal to 0, then not necessarily हो सकते हैं फिर भी, not necessarily independent. ठीक है. Not independence is a more stronger thing, अगर independence हो गए तो covariance तो automatically 0 हो जाए, ठीक है.
लेकिन कोवेरियंस किसी और केस में भी जीरो हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि कोवेरियंस जीरो हो जाए लेकिन इंडिपेंडेंट ना हो। एक हमने एग्जांपल क्लास में पहले पढ़ भी लिया, अभी आपको दोबारा से रिकॉल करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे। नाउ काफी सारी किताबों में, वेबसाइट्स के ऊपर आपको कुछ प्लॉट्स नजर आएंगे जो बताते हैं कि कोवेरियंस का मतलब क्या है। ठीक है। नाउ इफ if I can tell you in knowing X you can tell something about Y, knowing X you can tell something about Y, that means there is some dependency between the two. Yeah? Or more softly, there is some correlation between the two, or the covariance between the two is not zero, then that means कि x और y जो है इनकी वैल्यूज एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। अगर x का मैं बता दूंगा तो y भी आपको, ठीक है। सो if x and y increase together कि अगर x भी ज्यादा होता है तो y भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर कम होता है तो आपके पास PM2.5 इंडेक्स बढ़ जाता है, ठीक है। if there is a correlation between the two, if there is a covariance between the two, if there is a relationship between the two, if they both increase together, then covariance of x and y is greater than zero. If x and y decrease together, then covariance between x and y greater than zero or less than zero? Less than or greater than? Zero तो नहीं हो सकती, is also greater than zero, is also greater than zero, is also greater than zero. If x and y increase together or decrease together, then the covariance between the two will be greater than zero. Huh? If one increases and the other decreases, then the covariance is negative. कि एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप कोवेरियंस जो है वो आपके पास नेगेटिव आ रही है। नाउ ये कुछ प्लॉट्स में आपको बता देता हूँ जो आपने बहुत सारी शायद बुक्स में कभी आपको देखने को मिलेंगे। सो अगर मैं यहाँ पे x को प्लॉट करूं और यहाँ पे मैं y को प्लॉट करूं, और प्लॉट करने का क्या मतलब है, मैं इनकी कोई डेंसिटी नहीं प्लॉट करने लगा। I am not going to plot the density function here. What I am going to do is that I am going to run an experiment. I am going to run an experiment and generate a value of x and generate a value of y. कोई x की वैल्यू जनरेट करें और y की वैल्यू जनरेट करें। लेट्स से मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। फिर कभी ये आंसर आ गया, फिर कभी ये आंसर आ गया, फिर कभी ये आंसर आ गया, फिर ये आंसर आ गया, इस तरह ये आंसर आ गया, ये आंसर, ये इस तरह के कुछ आंसर आ गए, ठीक है। सो यू नोटिस कि x, जब x बड़ा होता है तो y भी बड़ा है, जब x छोटा है नेगेटिव है तो y भी छोटा है। सो इफ यू कैन सी दिस, ये बेसिकली ये हमारे पास ये एक इस तरह का जो है ये एक पॉजिटिव कोरिलेशन या पॉजिटिव कोवेरियंस वाला इंपैक्ट आ रहा है, ठीक है। व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑफ ए नेगेटिव कोवेरियंस और नेगेटिव कोरिलेशन? When one increases, the other guy decreases. तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, x जनरेट करता हूँ और y जनरेट करता हूँ, तो मेरे पास आंसर ये आ जाए, ठीक है। इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। ये बहुत सारे आंसर आपके पास आ रहे हैं। जस्ट रैंडम वैल्यूज, ये हर डॉट जो है, इफ यू लुक एट ईच ऑफ दीज डॉट्स, दिस टेल्स यू कि एक आपने एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें x और y दोनों की वैल्यू जनरेट की और उसको प्लॉट कर दिया। इस तरह की बहुत सारी वैल्यूज आप जनरेट करें। इफ x एंड y हैव अ कोवेरियंस व्हिच इज नेगेटिव, देन दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक, ये ऐसे नजर आएगा, ठीक है। ये मोस्टली इस तरह की चीजें, इस तरह की वैल्यूज होंगी। So in this case, the covariance of x and y is greater than zero, and in this case, the covariance between x and y is less than zero. It's less than zero. So covariance क्या बताती है कि knowing the values of one random variable will give you some idea about the value of the other random variable. अगर मैं आपको बता दूं, for example, if this is the case that I consider, ठीक है, if I tell you कि x
took a value of 7, तो आप कहेंगे कि very unlikely कि y will take a value of -5, या इधर इधर आने का जो है ना चांस बहुत कम है, कोई चांस नहीं है इधर आने, ठीक है. So that means कि if there is a covariance between the two random variables, knowing one will help you tell something about the other random variable. ठीक है. Now there are two examples which are given in the notes, one for the discrete case showing that zero covariance does not mean independence. तो आपको जो है दो एग्जांपल दिए हैं जिसमें रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट नहीं है, बट उनके दरमियान कोवेरियंस जो है वो जीरो है. शोइंग दैट जीरो कोवेरियंस डज नॉट मीन इंडिपेंडेंस. पहले डिस्क्रीट की एग्जांपल है, ये नोट्स में है, काइंडली ये वहां से जरूर देख लें. एंड द अदर इज फॉर द कंटिन्यूअस केस, ये भी नोट्स में है, इसको मैं आपको क्विकली से बता देता हूँ. Now recall that we did this example of two-dimensional PDF between x and y. तो x यहाँ पर था, y आपके पास यहाँ पर था, and uniform over this circle. ठीक है. तो इस केस में हमने बताया था कि अगर हम इसका joint density function लिखना चाहें, fxy was 1 over pi r square. Let's say मैं r को 1 ले लेता हूँ, तो 1 over pi was the density function over the region x square plus y square less than or equal to 1. Anyone recalls that? So in this case, given x, हमने आपको बताया था कि given y, x is uniform between minus square root of 1 minus y square to plus square root of 1 minus y square. ठीक है. अगर आपको y की कोई वैल्यू दी गई है, ये ग्रीन में दिखा देते हैं, if you are given that y is equal to this value, then x is uniform over this line. और इस लाइन के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे x is equal to plus square root of 1 minus y square है, और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे x is equal to square root of 1 minus y square minus. Why? Because सर्कल के ऊपर x square plus y square is equal to 1. सर्कल की एक्सप्रेशन ही है, x square plus y square would be equal to 1. ठीक है. So x is uniform between this guy. So expected value of x, obviously in this case, going uniform from minus some value to plus of that value, expected value of x would be 0. Variance हम find out कर सकते हैं, b minus a square over 12, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है हमें variance find out करने की. Now if you notice, in this case there is a clear dependence between x and y, because x is uniform between minus 1 minus y square से 1 minus y square plus 1 minus y square. ठीक है. So clear dependence between x and y. So given y, x is uniform between these two values. ठीक है. If we solve, we can show, again यहाँ पे show नहीं करेंगे, we can show that, ये हम find out कर सकते हैं कि covariance of x and y is equal to 0. कैसे show करेंगे? Covariance का expression से show करेंगे. Expected value of xy minus expected value of x, expected value of y. ठीक है. Expected value of xy, इसके लिए we will use minus infinity to plus infinity, minus infinity to plus infinity, 1 over pi dx dy, or expected value of x का density function, which is going to be 1 over square root of pi dx, going from minus
infinity to plus minus 1 minus y square to plus 1 minus y square. नहीं, इसमें हमें पहले x का डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा and then we will be able x का डेंसिटी फंक्शन फाइंड आउट करें. सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट हियर. उसके लिए हमें पहले x का डेंसिटी फंक्शन निकालना पड़ेगा, या कंडीशनल डेंसिटी से भी हम निकाल सकते हैं, इस वाली डेंसिटी से भी निकाल सकते हैं, उप्स, इस वाली डेंसिटी फंक्शन से भी निकाल सकते हैं, या x का अपना मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन निकाल के these values find out and then you will see that this will turn out to be 0. कोवेरियंस आपके पास 0 आ जाएगी, लेकिन they are dependent on each other. Similarly, discrete वाली एग्जांपल, ये दोनों आप काइंडली एग्जांपल जो है वो देखें. I want to recap on some propositions. Some important definitions. You call them definitions or relations. One is covariance between x and y is equal to the covariance between y and x. This is sort of obvious from the definition. The second is covariance of x and x. Now, this is very interesting. When I say that the covariance between x and x, हम तो covariance बात करते थे x और y की, तो वो ये बताती थी covariance कि how close they follow each other. Of course, if I'm talking about x and x और x तो बिल्कुल एक दूसरे को 100% ही follow करते हैं, ठीक है? So this is equal to expected value of x minus expected value of x, definition से y minus expected value of y, लेकिन यहाँ पे वो भी x minus expected value of x. And what is this definition? What is this? What is this definition? This is variance of x. This is variance of x. Thank you, Gohar, and thank you, Hassan. This is variance of x. Third, covariance of small a, which is a constant, times x and y is equal to a times covariance of x and y. A times covariance. कैसे? वो भी again definition के अंदर a डाल दें और वहां से आपके पास सीधा सीधा निकल आएगा. Covariance between x plus z and y is equal to, again, by putting the definitions, you can simply show that this is covariance of x and y plus covariance of z and y. X and y, z and y. Covariance between the sum of some random variables, I is equal to 1 to n xi, and then I is equal to 1 to m xj. This is equal to I is equal to pairwise covariance. ये जिस तरह हमने यहाँ पे भी pairwise covariance निकाली है, ये x plus z की y के साथ covariance जो निकाली है, x plus z की y के साथ जो covariance निकाली है, बेसिकली हमने यहाँ पे ये pairwise covariance निकाली है. अगर वो pairs बहुत ज्यादा हो आपके पास, a plus b plus c and d plus e plus f, तो सारों की pairwise covariance निकालनी है. So I is equal to 1 to n and j is equal to 1 to m covariance of xi with xj. यानी हर पेयर की आपने कोवेरियंस निकालनी है, हर पेयर की कोवेरियंस निकाल के उसको ऐड करना है. Now, variance of sums. So variance of x plus y, ये हमने देखा था कि अगर variance of x plus y, if x and y are independent, what it was, variance of x plus y, if x and y are independent, answer in the chat window. What is variance of x plus y and x and y are independent? Yeah, this was equal to variance of x plus variance of y if they are independent. But in general,
if they are not independent, if they are not independent, then we need to add covariance of x and y plus covariance of y and x. Okay? Which obviously this guy is the same as this guy. So this is 2 times of covariance of x and y. ठीक है? और हमें पता है कि ये अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगे, एंड वी विल बी लेफ्ट विद वेरिएंस ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ y. ठीक है? बाय द वे, ये तो सिर्फ 2 रैंडम वेरिएबल्स हैं, x और y. ठीक है? अगर बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स हो, if you have variance of summation of I is equal to 1 to n x I. Okay, so x1 plus x2 plus x3, if all of these xi's are IID, if all of these xi's are IID, हमने ये देखा था कि this was equal to the sum of the variances of xi if independent. लेकिन अगर इंडिपेंडेंट ना हो तो क्या होगा? अगर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो हमें कोई चीज इसमें ऐड करनी पड़ेगी, और वो चीज क्या होगी? वो चीज होगी पेयर वाइज कोवेरिएंसेस ऐड करनी पड़ेंगी. So that would be I is equal to 1 to n, j is equal to 1 to n, but j not equal to I, ताकि डबल काउंटिंग ना हो. Covariance of xi xj, covariance of xi and xj. There is a little proof of that. Again वो नोट्स में भी नहीं दिया हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं, इसको किसी किताब से देख सकते हैं, 2-3 लाइनों का प्रूफ है वो. Now I'm ready to define what we call correlation and how it is related to covariance. तकरीबन एक जैसा कॉन्सेप्ट है, तकरीबन एक जैसा. The only difference between correlation and covariance is that correlation जो है वो scaled होता है. ठीक है? So if you recall, हमने देखा था covariance between x and y, इसकी definition क्या थी? Expected value of x minus mean of x into x minus mean of x, y minus mean of y. Mu x and mu y. This is mu x is expected value of x, mu y is expected value of y. ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं कि covariance of 10x को y के साथ करें, तो this was basically 10 times the covariance of x and y. ठीक है? लेकिन मैं ये नहीं चाहता. मैं ये चाहता हूं कि ये जो कोई कांस्टेंट्स अगर बीच में आ रहे हैं, इससे जो है ना ये कोवेरियंस की जो रेंज है ये अनडिफाइंड है. कोवेरियंस की जो रेंज है, कोवेरियंस बहुत ज्यादा भी हो सकती है. कोवेरियंस जो है वो यहाँ पे मैंने 10 की जगह पे मैं अगर 1000 लिख दूंगा तो यहाँ पे भी 1000 लिखा जाएगा. ठीक है? So I don't want the covariance to be unbounded. In fact, covariance will be unbounded, but I can define correlation which is a normalized version of covariance. ठीक है? Correlation is normalized version of covariance. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि if I find the variance of, recall करें कि variance of x divided by standard deviation of x, ये क्या होती थी? Answer in the chat window. X divided by standard deviation of x, इसकी variance क्या होती है? Let's say x is a random variable, उसको अगर उसकी standard deviation से divide कर देंगे तो उसकी variance 1 आ जाती है. Remember जब हमने नॉर्मल की स्टैंडर्डाइजेशन की थी, उसमें से मीन माइनस किया था तो मीन 0 हो गया था, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया था तो वेरिएंस 1 हो गई. ठीक है? सिमिलरली वेरिएंस ऑफ y divided by sigma y will be equal to 1. ठीक है? Now we define correlation between x and y. ये रो का सिंबल इसके लिए इस्तेमाल होता है. This symbol rho is between x and y, defines the correlation between x and y. This is equal to the covariance between x normalized by the standard deviation and y normalized by its standard deviation. Okay? So this is equal to, क्योंकि ये standard deviations जो हैं ये constant हैं, ये sigma x sigma y ये बाहर आ जाता है,
So this would be equal to covariance between x and y. ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन होगी। इस नॉर्मलाइजेशन का ये फायदा हुआ है कि आपके पास जो कोरिलेशन की जो वैल्यू आएगी ये बाउंडेड होगी, ये बिटवीन ए सर्टेन रेंज होगी फॉर एनी एक्स फॉर एनी वाई, कोई भी एक्स हो कोई भी वाई हो। ठीक है, सो हेंस कोरिलेशन बिटवीन 10x और y के बीच में क्या होगा, ये जैसे हमने ऊपर देखा था, कोवेरियंस बिटवीन 10x एंड y वाज इक्वल टू 10 टाइम्स द कोवेरियंस बिटवीन x एंड y। लेकिन कोरिलेशन बिटवीन 10x और y के बीच में क्या होगा, दिस वुड बी इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ, ये वाली एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, कोवेरियंस बिटवीन 10x ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10x। वो 10x की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, 10x की स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी, would be variance of 10x उसका स्क्वायर रूट and y over sigma y. Yeah. So this will be equal to the covariance of, what would be the variance of 10x? What would be the variance of 10x? That would be 10 square variance of x, 10 square variance of x. ठीक है, so ये आपके पास x over sigma x आ जाएगा और ये y over sigma y आ जाएगा। This is the same as the correlation between x and y. यही तो डेफिनेशन थी उसकी। सो यानी ये देखें, ये हमने जो नॉर्मलाइजेशन की है, इससे ये चलाती हुई है कि ये जब उसकी x को हम उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन से नॉर्मलाइज करते हैं, y को उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन से नॉर्मलाइज करते हैं, तो इट डजंट मैटर कि अगर आप x और y को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, सो ये 10x और 10y के बीच में जो कोरिलेशन है वो सेम ही है जो x और y के बीच में कोरिलेशन, वो सेम ही होगा। Similarly, correlation between minus 3x and y would be equal to minus correlation of x and y. ये भी शो कर सकते हैं। Correlation between minus 3x and minus 4y would be equal to correlation of x and y. क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस दोनों के साथ माइनस है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। Now, the relationship between variance and correlation, variance and correlation, the relationship between these two, we saw that the variance of x plus y was equal to expected value of x plus y minus expected value of x plus y, which is expected value of x, expected value of y, whole square. ठीक है, इसको अगर एक्सपैंड करें, इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं ऐसे कि x माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x को यहाँ ले आते हैं, प्लस y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y को यहाँ ले जाते हैं, इसको स्क्वायर कर लें और फिर इस टर्म का स्क्वायर खोलें, इसका स्क्वायर खोलें। सो ट्रीट दिस एज a plus b whole square. So this would be equal to variance of x plus variance of y plus 2 times correlation of sigma x sigma y. If correlation is zero, if correlation is zero, which means uncorrelated x and y, uncorrelated x and y, then variance of x plus y will be equal to variance of x plus variance of y. ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, not necessarily means independence, not necessarily implies independence. So this does not imply independence. ये हो सकता है x और y फिर भी डिपेंडेंट ही हो, लेकिन variance of the sum will turn out to be the sum of the variances. अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो फिर भी ये ट्रू होगा, तो फिर भी ये ट्रू होगा, लेकिन अगर ये ट्रू है तो नॉट नेसेसरीली इंडिपेंडेंट होंगे। फिर if
correlation is greater than 0, if correlation is greater than 0, then variance of x plus y from this relation, variance of x plus y from this relation, ये देखें, variance of x plus y will be greater than the sum of the individual variances. Okay? And if correlation is less than 0, इसका मतलब है कि अगर correlation दोनों के दरमियान में greater than 0, इसका मतलब x और y एक दूसरे को support कर रहे हैं, एक दूसरे को support कर रहे हैं. अगर अगर correlation is less than 0, इसका मतलब है कि x बढ़ रहा है तो y कम हो रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. इन दिस केस द वेरिएंस ऑफ x प्लस y, एक ने इंक्रीज किया दूसरे ने डिक्रीज किया, जिसकी वजह से सम की जो वेरिएंस है वो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, वो थोड़ा नीचे की तरफ आएगी. सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर. व्हाई इज दिस द केस? if correlation is less than 0, if the correlation is less than 0, which means if x increases then y decreases, which means ये वेरिएंस क्या होती है? वेरिएंस तो यही होती है ना कि how far you move away from your mean. ठीक है. Now think of it कि if x is increasing, y is decreasing, तो आपका सम जो है x और y जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है वो थोड़ा डिमिनिश हो रहा है. तो इसका मतलब है कि जो उसकी वेरिएंस होगी वो इंडिविजुअल वेरिएंसेस के सम से थोड़ी सी कम हो जाएगी. Now we can also prove that, we can show that, again we can show that, see notes, we can show that the correlation between x and y is always between -1 and +1. -1 और +1 के बीच में होता है, इससे कम भी नहीं हो सकता, ज्यादा भी नहीं हो सकता. By the way, this definition of correlation and covariance applies to definition of covariance and correlation applies to same definition to discrete as well as continuous random variables. दोनों के ऊपर ये अप्लाई होती है, same definition, same definition. Now I have a very quick example. So 1 minute की example है. So you have defects in a VLSI chip. ये जो कंप्यूटर के अंदर चिप्स जाती हैं आपकी, in a VLSI chip is कितने डिफेक्ट्स हैं आपके पास? इट्स ए पोसॉन रैंडम वेरिएबल, क्योंकि सैंपलिंग है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं. जैसे पोसॉन रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर r, where r itself is gamma, r itself is gamma with parameters alpha and lambda. Okay? Find the expected number of defects n and variance of the number of defects n. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? Expected value of n would be equal to expected value of conditional expectation, expected value of n given r. But given r, n is Poisson with parameter r. Poisson की expected value क्या होती है? Poisson की expected value जो होती है वो उसका parameter के equal होती है, and that parameter is just r, ठीक है? So expected value of r, ठीक है? But r is gamma, alpha and lambda, so that means this is equal to alpha over lambda. Very simple. Yeah. Similarly, variance of n would be equal to conditional variance का यहाँ formula use करेंगे, expected value of variance of n given r plus variance of expected value of n given r. So this would be equal to, so variance of n given r is Poisson with parameter r, और Poisson की variance क्या होती है? Is the same as the parameter. Poisson की variance जो होती है वो उसके parameter के equal होती है. So this would be expected value of r plus variance of, again this would be variance of r, because expected value of n given r
is the expected value of n given given r. So this would be equal to the parameter of the Poisson random variable, which is r. But now expected value of r is alpha over lambda, which is because r is gamma, and the variance is alpha over lambda square. Alpha over lambda square. So this finishes our discussion of correlation and covariance. Very important topic. We will come back to this after the next lecture. We'll come back to this. Okay. So next lecture के अंदर हम limit theorems cover करेंगे. Limit theorems cover करेंगे, जिसके अंदर law of large numbers भी आ जाते हैं, जिसके अंदर कुछ probability के estimates भी आ जाते हैं. So we'll talk about those in the next lecture. So people who had some question, so I'm going to finish the class session now, but I'm going to start the office hours session. So अगर आपका कोई question था, I think somebody had a question early on material के बारे में. So please join that link. I don't want to prolong this video. इस video का size पहले ही जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है. So I'm going to finish this session here, and you can join the office hour session right after this. मैं फौरन ही वो start करने लगा. Office hours वाले link के ऊपर. Thank you.